मेरे को उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जुगल किशोर जी। आप मारन जी, दादा आपका जन्मदिन है, आज बैठ जाओ। श्याम बोल रहा हूं, बधाई आपको जन्मदिन की, जन्मदिन की बधाई, सारा सदन दे रहा आपको। Not getting a point of order, sir. Under Rule 229, read with 230, 231. Sir, when a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the speaker, indicating the reason for arrest, detention or conviction as the case may be, and as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate schedule. line और पढ़ लीजिए आप। Sir, just a minute, sir. Sir, I'm not reading 230, I'm reading 231. As soon as may be, the speaker shall, after receiving a communication, refer in rule to 229 or 230, read it out to the session. The session is there. Sir, Mr. Farooq Abdullah, a member of this house, is missing. He is arrested. Sir, we have no intimation. The Home Minister is here. You as the speaker should protect the members. You should be neutral. And you inform what is the state of Mr. Farooq मैंने दे Abdullah. दिए। चलो, जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सदस्य आप बोलिए। आप माननीय सदस्य में एक मिनट, माननीय सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिना किताब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलोगे क्या? हाँ, एक मिनट रुक जाए। ये जवाब मुझे देना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। नो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब मुझे देना, माननीय गृह मंत्री जी को नहीं देना। व्यवस्था आपने मुझे दी है। हाँ दादा बोलो। मेरा